ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए, लेकिन पहले जरा टटोल लीजिए। अभी दानिश जी ने समझाया इसको कि भरपूर इन्फॉर्मेशन आजकल मिल जाता है एक बटन दबाने से, और हो सकता है कि जो आपको सुनाया जा रहा है या जो आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा टटोल लें, क्योंकि हो सकता है कि वो सही ना हो, गलत भी हो। आमतौर पर देखा गया कि वो सही होता है, लेकिन एक बार उस ओर भी ध्यान दे दिया जाए। बहुत से लोग जो हैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं, अलग अलग किस्म की खबरें जो हैं वो छप जाती हैं इंफॉर्मेशन में। केवल यही एक सावधानी है कि आप उसे बटोर तो लीजिए, लेकिन एक बार ज़रा टटोल लीजिए, मतलब उसको रीचेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। ये तो अभी दानिश जी ने और MP सिंह साहब ने बताया कि ज्ञान है, सवाल जवाब चलता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको स्वयं पता नहीं होता है। घर बैठे जो परिवार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो एक अच्छी बात होती है। सारा परिवार जो है एक साथ बैठ करके एक कार्यक्रम देखता है, और कई बार वो परिवार के अंदर भी KBC चलता है। माता पिता जो है वो संतान से पूछते हैं, भैया इसका जवाब मालूम है कि नहीं। आजकल तो ऐसा हो गया कि संतान जो है वो माता पिता से प्रश्न पूछ रही है, आपको मालूम है या नहीं। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल बना हुआ है, एक घरेलू माहौल बना हुआ है घर के अंदर। एक चीज़ जो मुझे बताई गई वो ये कि जो ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं और जिनको अवसर नहीं मिलता है MP बाहर जाने का, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक डाइवर्जन है, एक एंटरटेनमेंट है कि घर बैठे कहीं जाना नहीं है, यहीं पर बैठ करके मैं अपने 1-1.5 घंटा जो है वो अपने आराम से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। किसी ने बताया मुझे कि ये जो ऐसी अवस्था आ जाती है सबके जीवन में कि जब उम्र हो जाती है और कहीं इधर उधर जाने का मन नहीं करता है, तो वो इंतज़ार करते हैं इस बात का कि रात को कब देखेंगे इसको, ताकि हमारा जो एक तरह से एंटरटेनमेंट है वो हो जाता है। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात हुई। ये अभी आपने देखा हमारा जो वीडियो उसमें, और मिस्टर MP सिंह हैज़ डिस्क्राइब सम ऑफ द चेंजेस, जो कुछ बदलाव आया है, चाहे वो 7 करोड़ से 7.5 करोड़ है, या वो 75 लाख का जो एक और पड़ाव है। कहीं ना कहीं वो इसकी वजह ये भी थी कि उसमें 7.5 में 75 दिखना चाहिए, या जो पड़ाव है 75 लाख का उसमें 75 दिखना चाहिए। तो एक ये बहुत ही सटल इंडिकेशन कि हम लोग अपना 75 आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें। The pandemic actually kept all of us away from meeting anyone, and still there are many occasions when medically we are not about to be in public, so that's some kind of a holding back. But I'm very glad that we're able to have a live audience on the floor today and in this entire season. We tried playing with the audience somewhat distinctly by keeping them away, going through various tests and not being able to, touch the contestant, not being able to hold their hands or guide them to the chair if there's a lady, just going and embracing them when they do well. That was kept away, and that kind of a distance, that physical distancing was somewhere not the very same as we have now. But it's wonderful to have that atmosphere once again, and to be able to feel a bit normal in that sense. So I'm very glad that I'm here, and some of the restrictions that we had earlier on have now been removed, and we're closer to the audience. 22 वर्षों की जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ है वो? सर मैं देखता हूँ कि मुझे एक और नौकरी मिल गई, और क्या। कंटेस्टेंट्स ही इस शो की महिमा है। जब वो अच्छे होते हैं, जब वो सही खेलते हैं, उनकी कहानियाँ जो है हमको सुनने में आती हैं, और किन कठिनाइयों से वो गुजरते हैं या क्या क्या उन्होंने अपना योगदान दिया है देश के प्रति, उन सबको सुन करके हम सब बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा काम तो केवल प्रश्न डालने का है और बताने का है कि सही है या गलत, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो सवाल हैं, उनके जो उत्तर हैं,
वो हम सब से कहीं ज़्यादा एक बहुत ऊंचे स्थान पे हैं। और अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। सबका कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है देश के प्रति, और उसे जान करके और इस माध्यम से, KBC के माध्यम से इसका प्रचार हो देश भर में, ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद पहली बार यहाँ आ रहे हैं, और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो योगदान रहा है वो अद्भुत रहा है। अभी आपने देखा हमारे वीडियो में जो एक आर्म फोर्सेस से दो जो आए थे, उनकी कहानी सुन करके तो आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा कभी इस ओर ध्यान गया नहीं, या उनकी कहानी हमने सुनी नहीं। वो जो आर्मी से आए थे, उन्होंने कहा कि 43 bullets or shrapnel are still inside my body. This is not a joke. I mean, look at the sacrifice. और गर्व से कहते हैं कि जितना कुछ हमको लगा है वो हमारी छाती पे लगा, हमारे पीठ पे नहीं लगा। I was facing the enemy. I was not running away from him. These are some of the brave stories that we hear. And how wonderful for him to say कि मेरे अंदर जो खून है वो मेरा खून नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का खून है, क्योंकि इतने लोगों ने अपना खून दिया है उसकी जान बचाने के लिए। These are some of the amazing stories that we have. और आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग आ रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सब दर्शाते हैं कि देश जो है प्रगति के रास्ते पे कितनी तेज़ी से चल रहा है, और इनको यहाँ मिल करके तो हम बहुत प्रभावित होते हैं। और इसी तरह हम अपने शो को भी एक तरह से बढ़ावा देते हैं कि हमें अवसर मिलता है ऐसे लोगों से उनका परिचय जान सकें, क्योंकि दैट इज़ व्हाट रियली gives a lot of gravity to the show. Actually, I read somewhere that in a similar situation, one of the persons from our country was talking about how great India is and so on and so forth. And there was an Englishman who was there in front of him and said, how about talking something about Britain? So he said, you are responsible for the largest number of countries being able to celebrate Independence Day. Meant to be a joke, but yeah, I thought it was very pertinent. मेरे ख्याल से जितना कुछ अभी तक हमने किया है, चाहे वो एक तरह से अभी आपने वीडियो पे देखा किस तरह से एक रचना लिखी गई है, कविता लिखी गई है, और उसके जो वाक्य हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो शब्द हैं, वो दर्शाते हैं कि भारत किस पथ पर चल रहा है। और 75 वर्ष एक देश के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए कि और कितने देश हैं हमारे विश्व में जो कि 75 सालों में वो दिखा सकते हैं जो भारत ने दिखाया, और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, कहीं भी हो, 75 साल में जो कुछ भारत ने किया है वो अन्य देश जो कि जिनको कि 75 साल हुए आज़ादी मिले, उनकी क्या स्थिति और हमारी क्या स्थिति, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत कहाँ पर है। Where did you read that? This has come from Indian Express. Just read that thing again. There is each time I say never again, and yet it all comes back when the commitment has been made. आपने अपने ब्लॉग में लिखा था। जी, अरे भाई वो कुछ और फिर ये ज़माना बड़ी मुसीबत का हो गया, कुछ भी लिखिए न जाने क्या क्या मायने निकाल लेते उसमें से। बहरहाल वो लिखा था जहाँ हम काम कर रहे हैं अभी एक फिल्म में हैदराबाद में, उसमें हमारी जो वेशभूषा है उसमें 1000 तरह के प्रोस्थेटिक हैं, बाल है, दाढ़ी है, लंबे लंबे हैं। वो कह रहा था मैं
कि हर बार मैं तय करता हूँ कि यार ये जो अगली पिक्चर इसमें अगर दाढ़ी होगी तो मैं काम नहीं करूँगा, तो हर बार वापस वही पिक्चर आ जाती है, उसमें काम करना, तो उसका वर्णन है, केबीसी के बारे में नहीं है। केबीसी पे आप व्हाट ब्रिंग्स यू बैक अप, क्या है जो आप वापस आकर हॉट सीट पे हमारी जो जनता है, जो यहाँ अभी प्रेस बैठा हुआ है, यहाँ बैठी रहती है, और हम जब आते हैं तो जिस तरह से वो स्वागत करते हैं, जिस तरह से वो कंटेस्टेंट को उत्साह भराते हैं उनका, वही चीज़ें हैं जो बार बार हमको लाते रहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रश्न जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि, और ये मैं नहीं बता सकता हूँ और मुझे मालूम नहीं कि वो ये जो प्रश्नावली है ये कहाँ से आती है और कैसे आती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे रिसर्च होता है अलग अलग शहरों से, फिर ये एक मास्टर कंप्यूटर में डाला जाता है और वहाँ से फिर अपने आप रैंडमली चुन करके आते हैं प्रश्न। कहीं ना कहीं तो इस सोच को बरकरार किया होगा कि ये ज़्यादा कठिन है, ये ज़्यादा आसान है, या इस ओर अगर आकर्षित करना है किसी कंटेस्टेंट को तो इस तरह के प्रश्न डाले जाएं ताकि वो उसका भी ध्यान रखे और उसका उत्तर जान सके। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर नौजवान पीढ़ी है, ये जो नई पीढ़ी है आज की, उसको आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न को डालना होगा जिनसे कि उनको भी लगे कि हाँ, मैं यहाँ आकर के न तो केवल अपने ज्ञान की बात करना चाहता हूँ या ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये स्टार्टअप किया या मैं आजकल ये कर रहा हूँ, बल्कि साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आपका ये प्रश्न कठिन था लेकिन मेरे पास उसका उत्तर है। सर, ये बड़ा भयंकर सवाल है क्योंकि हाथ पांव कांपने लगते हैं। अभी यहाँ से निकलूँगा फिर सोचूंगा क्या होगा, कल कैसे होगा, न जाने क्या होगा, कैसे कर पाएंगे या नहीं। तो प्रतिदिन सर वो एक डर लगा रहता है कि कैसे कंडक्ट करेंगे अपने आप को। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जनता बैठी है, लेकिन जब जनता जो अच्छी तरह से न केवल स्वागत करती है लेकिन वो भाग लेती है हमारे इस कार्यक्रम में, वो हमें प्रोत्साहित करती है। और जब भी वो आती है तो मैं सबसे पहले धन्यवाद उन्हीं को देता हूँ कि आपकी वजह से हम हैं, और आप जिस तरह से अपनी रुचि दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, वही जो है वो हमको प्रोत्साहित करता है कि खेल को आगे बढ़ाएं या बातचीत करें। कंटेस्टेंट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर होता है, किस तरह से उसका व्यवहार होगा, कैसे वो बात करेगा, कौन सी ऐसी बातें हैं उसके जीवन की जिसको हम आगे बढ़ा सकें, न केवल शो के लिए बल्कि जो जनता हमारा जो कार्यक्रम देख रही है उनको भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और जो लोग भी इसको घर बैठ करके देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चलता है कि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए, या चलो इसको ढूंढते हैं, या कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें मालूम है। तो it's like a combined effort by everyone coming together. It just brings people together towards a common cause, and I just feel it's in this modern world, you know, all of us are going in diverse directions and leading our own lives and everything, but this is one show that brings everyone together, and it's wonderful to see families sitting together and being involved in one common fact. I know that there are many other factors that are common, but I do believe that this is one factor that brings all of them together. Right now you're just seeing three of us sitting here, but I just want you to know that there's a tremendous backup crew and a team that is involved in the show of over 400 people, and you never get to see their faces, you never get to talk to them, but if it was not for them, this show would never have happened. And I really want to applaud the entire people behind the screen and behind the stage who work assiduously. And you know, we come here at an appointed hour, but they've been here hours before to set everything up and make sure that the show goes smoothly. I do appreciate that, and I love the fact that it is because of them that we are able to do what we do. In particular, I want to say that the percentage of the ladies that work on this show is almost equally balanced, and they are so hardworking,
So I want to thank him. Thank you. We are introducing a new palau at 75 lakhs, which will empower the contestant and encourage the contestant to take a little bit of risk for the next question, which is 1 crore. And even if she or he gives a wrong answer, will fall to 75 and not to 3.2 lakhs as was done till last season. The game play will be engaging as always and thrilling. We have decided to reduce the number of lifelines from 4 to 3 in this season. And the 3 are 50-50, video a friend, audience poll. Those are the 3. Also, the KBC play along becomes more exciting with the participants getting a chance to come on the hot seat every Friday. So every Friday we'll have 10 of those coming and playing with Mr. Bachchan. So that's a huge thing for KBC play along. The mix of contestants is also very interesting and exciting, and actually represents New India, which is aspiring India, and we would like to show you some clips of the kind of contestants that you will get to see. That's always our intent, to keep meeting a cross section of our viewers and people in general to understand where the nation is going, which direction are we moving in, and try and convey that message through our campaigns on Kaun Banega Crorepati. And I think we've been successful in most cases, if not all, and it gives us immense satisfaction that we are able to connect to them and get them on to view KBC and enjoy it. And also it's a very great, a strong platform for knowledge and learning. So we're giving back to them as well in that sense. Thank you, sir. By nature, Indians are emotional, and when they are on television, the emotions do come out, because somebody who has sat for hours to get audition in Indian Idol or in a Super Dancer, or has spent so many time to listen to the question, answer the question, and come for an audition and reach a KBC set, it's a dream come true for that person. Is always overwhelmed with the emotions. And as we know, this country, 140 crore population, they come from different socio-economic category. There are people who are startup, they're doing great in their life. There are people who are poor and they come from poor background. We don't actually design, we design the process in which they are audition and come to KBC or any other show, but we don't select them on virtue of their emotional story or otherwise. I personally believe if you don't have emotion, you will not come all the way. If somebody is not emotional about KBC or about Indian Idol, why would he or she take that extra effort to come all the way? So that emotion comes, they come with a lot of emotion, and sometimes when any person who comes and in a KBC set, in front of him or her there is Mr. Bachchan, it is very natural that person will get slightly overwhelmed and emotional about the situation. So I think it has very little to do with our desire, it is how the reality is. As I said earlier, our constant interaction with the viewers and cross section of people keep us cued into the mode of the nation, and that's what you see on KBC, and gives us an immense connect with people and the contestants that come on the show, and with Mr. Bachchan interacting with them gives them and us an opportunity to understand our great nation better, and how people think about their own surrounding, their own environment, and where they come from, what they want to achieve. There are some inspirational stories that come out, and Sir spoke about some, but there are many that we have seen in the last many seasons that we have done of KBC, and it celebrates, as I said earlier, knowledge and ज्ञानी आपको सच्चा आपका सही हक दिलाता है. It's something that resonates with me even today. One of our campaigns, and KBC stands for it. Web or digital needs a different format of KBC. There is KBC which is consumed both on TV as well as digital.
In fact, last 3-4 years, the viewership on television has been there, but the viewership on Sony Live has been growing. So my sense is that the medium in which you consume changes according to the device that you use and the generation, you know. But the content itself doesn't need, is for a consumer, not for a device. So, you know, so I think KBC will continue, and it will be as the audience start using more digital medium, more portable medium, more mobiles, more, the consumption of KBC can move from television to there. But I don't think we need to do any specialized web version for it. सर एंकर तो वही होगा ना. You have any doubts, sir? No, I thought maybe if the format is changing, you get somebody else. Sir, I said format is not changing, the device is only changing. Okay. You know, they're moving from TV to... बच गए. अमिताभ सर, नवा दुनिया से through the seasons, what according to you has changed or remained the same in the show? What has changed? What has changed or remained the same? तो क्या बदला है और क्या बरकरार रहा है? The show has always remained the same because it follows a certain format which is technically, legally, we cannot change. But the anchors keep changing, and that's fine. No, I mean, I haven't been the anchor all along. I mean, and there are so many other anchors in different languages, and they're all doing so well. Danish sir, Indian television say